Crozier, they built a rock igloo to serve as a field laboratory to study the penguins. It was from here that they made their way onto the sea ice and became the first men to witness the midwinter breeding of the emperor penguin. Emperors may be easy to like, but they aren't quite so easy to find, let alone study. They mostly breed in inaccessible places and in the darkness of winter, so their colonies haven't. The explorers reached the emperor penguin rookery by climbing the huge walls of ice that surrounded it, and they snatched 5 eggs. Cherry dropped 2 as they struggled back to the igloo. But this was not the end of their misery. They then became trapped in a particularly violent blizzard. Then, as they reached their target, their tent blew away first and the igloo roof followed. For 2 days they remained bundled in their sleeping bags, clinging to life beneath a growing snowdrift, without food or cover until there was a lull in the blizzard and Bowers found their tent. Our lives had been taken away and given back to us, Cherry wrote. Incredible but true, on the 1st of August 1911, the trio finally staggered back to base camp, their faces blistered and scarred, clutching their precious load of 3 eggs. They had spent 6 weeks in the Antarctic winter, traveling from Cape Evans to Cape Crozier to gather rare emperor penguin eggs from their natural habitat. Hello students, unlike destination, this is unit 4 and in this chapter, section 1, we are going to know about emperors on ice. Basically, unlike destination, वो destinations होती हैं जिस destination पे हम यूजुअली जाते नहीं हैं, नॉर्मल पीपल वहाँ नहीं जाते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर खतरा होता है या एक तरह से कह सकते हो एडवेंचरस जर्नी होती है वो. तो in this section 1 we will read about the adventure journey and later came to known as the worst journey of the world. एक एडवेंचर जर्नी जो एडवेंचर पे गए थे, उसके बाद वो जो जर्नी जिसमें उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा. On 27th June 1911, Dr. Edward Wilson, Ashley Cherry and Gerard and the Lieutenant Henry Robertson Ryder Browns left their base camp. Base camp जहाँ से वो चलना शुरू हुए थे, ये सब लोगों ने मोस्टली ये क्या करते हैं, ये लोग ट्रिप्स पे जाते हैं और ये तीनों के तीनों 27 जून को 1911 में वहाँ से मूव करते हैं. Dragging 2 9-foot long sledge loaded with 757 pounds of supply and equipment. इनकी जो स्लेज है, जो एक तरह से कहते हो जो खींचने वाली चीज़ होती है जिस पे बोल रख के खींचा जाता है, उस पे ये लगभग 757 पाउंड का वेट इक्विपमेंट्स का और फूड सप्लाई का रखते हैं. They had to flow across the Antarctica's rose land in the pitch black, absolutely dead of the polar white. यानी कि उनको ये वर्क हार्ड करना था, उन्हें वहाँ पे मेहनत करनी थी, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो अंटार्कटिका जो है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है, ऐसा कहा जाता है. तो इसी तरह से वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है. They were to trek on the terrain where they would rarely see the ground of their feet and all the unlike price of 3 emperor's penguin eggs. They were track यानी कि वो वहाँ पे जा रहे थे. वो जा क्यों रहे थे? वो पेंगुइन जो अब यू मस्ट बी नोइंग अबाउट पेंगुइन वर्ड, वो उसके बारे में उसके एग लेने जा रहे थे. By the time the trio reached to the penguin rockery at Cape Crozier, Cherry wrote that he would have given 5 years of his life for just 1 night in the warm bed. तो जब वो पहुंचे तो वो ये बोलते हैं कि मैंने ये 5 साल अपने बिता दिए कि एक अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत होता है, एक अच्छी नींद अच्छी तरीके से सोने के लिए. डॉक्टर एडवर्ड विल्सन हु इन्वेस्टिगेटेड his
6-week trip on the depth of the Antarctica winter, later described it as the weirdest world nest expedition that has ever been and ever will be. उन्होंने भी इसको अब एक बहुत ही बियर्ड यानी कि बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस के तौर पे डॉक्टर विल्सन ने ये हैं एडवर्ड विल्सन ने इसको स्टार्ट किया है. Henry Robertson Brown, Edward Wilson, and Apsley Cherry geared out to leave the Cape Cruise. ये फोटो है उनका एक इसमें बुक में दिया हुआ. This journey had its genesis during the discovery expedition of 1901 and 1904, when the first rookery of breeding emperor penguin was discovered at a Cape cruiser or Rose Island or slaving party under Lieutenant Skelton, when discovery and the expedition ship has trapped in the ice for the second year. तो उन्होंने ये जो सब कुछ किया था वहाँ पे जो शिप्स थे वो डिस्कवरी के वगैरह के वो शिप वहाँ पे ट्रैप हो गए थे. It gives Slackerton an opportunity to give first biological to study the astonished bird. He concluded correctly that the bird lay their egg in the middle of the Antarctic winter, and one of the most astonishing ornithologist discoveries. ये ऑर्थोनोलॉजिस्ट होते हैं जो पाषाण या पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी निकालते हैं. कह सकते हो कि रिलेटेड टू द वर्ड सॉरी ये बर्ड्स के बारे में जानकारी देते हैं. उन्होंने ये बताया कि ये मिड ऑफ द अंटार्कटिका विंटर में ये ठंड में ये एग देती है. So subsequently visits to the rockery led to the wonderful series of the observation that were later published. उन्होंने बहुत सारे अपने अनुभवों को शेयर किया है. However, at the time it was thought incorrectly that emperor penguin was one of the planet's most primitive bird and that analyze most primitive मैंने सबसे पुरानी वर्ड है ये and that analyzes its improves would reveal links. Analyze मतलब होता है कि उसके बारे में जानकारी देना. Reveal link between all the birds and their reptile perspectives, यानी कि जो इसके पूर्वज हैं जो भी रेप्टाइल्स हैं रेप्टाइल जो रेंगते हैं और बर्ड्स जो फ्लाई. Hence these eggs were particularly grabbed by the ornithologist जो ornithologist जो भी वर्ड्स के बारे में डिस्कवर करते हैं उन्होंने उसको अच्छे से एनालाइज किया. The argument suggested that if only embryos of the primitive bird could be obtained in an early age of the development, then surely one would found the reptilian scale or going through. Early enough stage यानी कि बहुत जल्दी पता कर लेंगे अगर. ये आर्गुमेंट सजेस्ट करता है कि एम्ब्रो द परमिटिव बर्ड जब भी परमिटिव बर्ड है उसका एम्ब्रो जल्दी मिल जाएगा उन्हें. तो दे श्योरली वुड बी फाउंड द रेप्टाइलियन स्केल. उसका जो रेप्टाइलियन स्केल था वो बहुत जल्दी पा जाएंगे. Some other dinosaurs phrase of development. जिस तरह से वो डेवलपमेंट है वो डायनासोर के फ्रेजेस यानी कि ये जो हो गया ठीक है. Thus obtaining the embryo of the emperor penguin was regarded as a major ornithologist prize. A scientist equivalent perhaps to the scientific equivalent perhaps to the obtaining the pole itself. तो इसके बारे में जानना एक जैसे हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल पता किया उसके बराबर है ये. Till date these eggs are one of the most precious ornithologist specimen on the planet. आज तक की सबसे बड़ा कह सकते हो प्रीशियस हैं
specimens हैं. Scott realized that it would be very courageous to dangerous journey, but he knows that Wilson was very keen on making his journey on considerably difficult for the scientific prize. For him, it was the quest for truth, and that was important. स्कॉट को ये पता था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जर्नी होगी, बट विल्सन बहुत ज़्यादा कीन था, यानी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था इसके बारे में जानने के लिए, और ये साइंटिफिक प्राइज उसको मिल चुका है कई बार पहले भी. फॉर हिम इट वॉज द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ दैट वॉज इम्पोर्टेंट. उसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रकार का था वो, नॉट worldly success. Additionally, they felt that this winter journey would give them an unexpected opportunity for further scientific work, which would answer questions and would critically important to the success of the forthcoming pole journey. तो उन्होंने कहा ये जो हम जर्नी ले रहे हैं तो इससे आगे वाली जनरेशन को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा. Firstly, it gave them the opportunity to try out different sledging rations under extreme field condition. उन्होंने पहले तो ये जाना कि किस तरह से इस स्लेज को चला सकते हैं, and with varying quantity of fats, etc. First, they gave the opportunity to try out the sledge ration and varying quantity of the fats, etc. Secondly, Scott had requested that his meteorologist deliver prediction for the most likely weather condition to be the encounter of on the Great Ice Barrier during his attempts on the pole. यहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं जो वेदर के बारे में बताते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्शंस निकालते हैं, तो ये भी जानना चाहता है वो कितना सही निकाल पाते हैं. फॉर दिस दे नीडेड वेदर डाटा from the Great Ice Barrier in winter. Thus, the winter journey now became the utmost important to Scott and the success of the pole journey, as well as begin with the greatest scientific interest. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था उन लोगों के लिए, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी समझ रहे थे वो लोग. सो इनने जो भी इन्होंने किया है, इम्पोर्टेंस उस चीज़ का बढ़ गया. Captain Scott started planning his second expedition abroad. Terra Nova, the ship was the reinforced from bow to stain his 7 feet of the oar to protect against the Atlantic ice peak. तो जब उन्होंने प्लानिंग किया टेरा नोवा अब्रॉड जाने का, द शिप वॉज रीइंफोर्स्ड फ्रॉम द बो एंड स्टैंड, यानी कि उस पर इस तरह से बनाया गया था, ओक ट्री को लगाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए. कैप्टन स्कॉट डिस्क्राइब टेरानोवा एज अ वंडरफुली फाइन आइस शिप. टेरानोवा ने ये आइस शिप बनाया, उसका नाम बताया गया. एल्स सी बम्प द फ्लूज with might sock crushing and grinding away through some twisting, turning avoid others. She seemed like a living thing fighting a great fight. जो इसको उन्होंने टेरानोवा को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि ये एक बहुत ही शानदार शिप थी, एंड एज ये जिस तरह से ये मतलब फ्लोट करती थी इन माइटी रॉक सॉक्स, बहुत सारे झटकों को उनको सबको बर्दाश्त करते हुए, क्रश करते हुए आइस को, और ट्विंट करते हुए अवॉइड अदर्स. इसको फाइटिंग और ग्रेट फाइट बताया है, लिविंग. सो this is the part 1 of this video, and in the next video we will discuss